So, hi everyone, good evening to all of you. Welcome to the explainer series and this is, I think, another part of the explainer series where we discuss the details of the logical reasoning section. So, what do we mean by the explainer series first? हम लोग यहाँ पे क्या चीज अचीव करना चाह रहे हैं? Here we are trying to tell you section wise details of the syllabus. ठीक है? एक एक सेक्शन को हम उठा रहे हैं और उसमें क्या क्या डिटेल्स हैं, कैसे पढ़ना है, क्या रेफरेंस बुक है, कौन मतलब सेक्शन का सिलेबस क्या है. सो द एक्सप्लेनर सीरीज का जो पर्पस है दैट इज बेसिकली टू टेल यू द सिलेबस ऑफ क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट. ठीक है, सो लेट अस बिगिन विद द एक्सप्लेनर सीरीज टुडे. एंड today the focus will be on one of the very important sections of the law entrance examinations, which is the logical reasoning section. ठीक है, I hope all of you are ready. I hope you guys have your notebooks and your pens. You would be required to take a few notes. In case अगर अभी तुम्हारे पास वो notebooks and pen नहीं है, you can just have a feel of the complete session and then go back, revisit the session, and during that session and while you revisit it, you may take down notes. So I welcome you all to the logical reasoning explanation series. This is Karan Mehta, one of the directors of Legal Edge Tutorials. So let's get started. Now, इसमें एक सबसे पहले व्हाट एग्जैक्टली इज एनालिटिकल रीजनिंग. कभी वो कुछ लोग उसको क्रिटिकल रीजनिंग बोल देते हैं, कभी कुछ लोग लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं सेक्शन को. सो व्हाइल यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन फॉर क्लैट 21 एंड क्लैट 22 और क्लैट 22, यू वुड नीड टू अंडरस्टैंड कि यार क्लैट 21 20 कभी कोई एनालिटिकल रीजनिंग बोलता है, कभी कोई क्रिटिकल रीजनिंग बोलता है, कभी कोई लॉजिकल रीजनिंग बोलता है. सो ये पूरी चीजें हैं क्या. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन ऑल दीज वर्ड्स. ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग हमेशा से यूज हो रहा था. क्रिटिकल रीजनिंग एज अ वर्ड comes from a examination called GMAT, जहां पे ये पूरा critical reasoning, which is more around the passage based logical reasoning questions, and logical reasoning is another very famous word. So mota mota tum ek dekho, the section is known as logical reasoning. Logical reasoning is divided into two parts. One is analytical reasoning and the other is critical reasoning. कोई बहुत क्लियर डिफरेंशिएशन नहीं है बिटवीन एनालिटिकल एंड क्रिटिकल रीजनिंग. ठीक है, कोई बहुत मेजर डिफरेंशिएशन नहीं है. कितनी बार सेक्शंस यहां से रादर टॉपिक्स यहां से वहां स्विच होते हैं, बट एक क्लियर कट क्रिटिकल रीजनिंग में डिफरेंशिएशन ये है जो कि जीमैट से आता है, विच इज द पैसेज बेस्ड प्रॉब्लम्स. ठीक है, पैसेज बेस्ड प्रॉब्लम्स को हम एनालिटिकल रीजनिंग में जनरली कंसिडर नहीं करते हैं बिकॉज द मदर ऑफ दोस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इज बेसिकली एन एग्जामिनेशन कॉल्ड जीमैट. और ये वहां से तो जीमैट उसको क्रिटिकल रीजनिंग बोलता है, तो अब धीरे धीरे पूरी दुनिया वो वाले सेक्शन को क्रिटिकल रीजनिंग बोलने लगी है. बट तुम समझो, द broader section name is logical reasoning, which is divided into two parts. एक होता है अनैट, दूसरा होता है क्रिटिकल. दोनों में क्लियर बाउंड्रीज डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है. बहुत सारे एग्जामिनेशंस बहुत सारे टॉपिक्स को इंटरचेंज करके भी पूछते हैं. सो इसमें हमें कुछ कंफ्यूज नहीं होना. हमारे लिए the name of the section would be logical reasoning. As I said that the boundaries aren't defined. One thing that you have to understand here is CLAT, ALIT, SLAT, MHCT, LSAT and CUET. हम ये 5-6 लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की बात कर रहे हैं. ठीक है, एंड योर एग्जामिनेशंस आर इवॉल्विंग. All aspirants have to understand one thing कि तुम्हारे examinations evolve हो रहे हैं. Now what I mean when I say that the examinations are evolving, examinations are evolving का मतलब ये अभी भी, so they are not, if you understand CLAT is not a 30 40 50 year old examination. तुम जितने भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की बात करो वो काफी रिसेंटली स्टार्टेड एग्जामिनेशंस है. तो अभी वो लोग भी समझ रहे हैं कि हमें एग्जामिनेशन में क्या पूछना है, क्या करना है. दे एक्चुअली कीप ऑन चेंजिंग a bit of your syllabus, but syllabus announcement आता है दिसंबर जन तक. So I would just a suggestion from my side that your examinations are evolving, and this goes for every section, that English, Maths, Logical, Legal and GK and Current Affairs हर में है. So while you are preparing for an examination that will happen in 21 or in 22, तुम्हें तो पूरा umbrella cover करके चलना पड़ेगा.
ठीक है। डोंट बी श्योर ऑफ कि क्लैट 2020 का जो सिलेबस है वही एग्जैक्टली सिलेबस 21 में आ जाएगा, क्योंकि क्लैट 19 में जो सिलेबस था वो पर्टिकुलर सिलेबस 20 में नहीं है। यस, द एग्जामिनेशंस आर इवॉल्विंग, वो कुछ चीजों पे एक्स्ट्रा फोकस कर रहे हैं। कंसोर्शियम रिसेंटली बना था, ठीक है, क्लैट का जो कंसोर्शियम बना है वो बहुत रिसेंटली लास्ट ईयर ही बना था। सो वो भी अपनी खुद की नीड्स को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं एंड दे आर इंप्रूविंग द एग्जामिनेशन और दे आर इवॉल्विंग द एग्जामिनेशन। तो बहुत ज्यादा हेड बाउंड स्ट्रेट होके एकदम ऐसे मुझे ये आएगा और ये नहीं आएगा, इस तरीके से तुम्हें अपने सेक्शन की प्रिपरेशन नहीं करनी। जो अभी दिख रहा है नहीं आएगा, शायद वो जनवरी आते आते आ जाए, ठीक है। एंड जब वो नोटिफिकेशन आता है तो जनवरी में आता है। तो जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम एक चीज समझे, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन दैट आर रिलेटिवली न्यू इन द कंट्री। सेकेंड, द एग्जामिनेशंस आर इवॉल्विंग। तो इसका सिलेबस आज पर्टिकुलरली डिफाइंड नहीं है, पर हां, अगर मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखूं, अगर मैं 5-6 एग्जामिनेशंस को टुगेदर देखूं, तो उसका सिलेबस डिफाइंड है। नाउ व्हाट इज योर सिलेबस? अपन एक एक चीज के सिलेबस पे चलेंगे, बट उसके पहले आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड अ फ्यू पॉइंट्स। सिलेबस के पहले दीज आर समथिंग दैट एवरी स्टूडेंट हैज टू अंडरस्टैंड। तुम्हें जितना जल्दी अंडरस्टैंड कर लोगे, तुम्हारी प्रिपरेशन उतनी ज्यादा अच्छी होगी, राइट? द अर्लियर यू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स, योर प्रिपरेशन विल बिकम मच बेटर। द फर्स्ट पॉइंट इज, they are not your school examinations. Yes, you are writing a national level entrance test. You're writing a national level objective type entrance test. ये school examinations नहीं है. Why am I comparing these examinations to a certain school examination? School examinations में you know कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा। यू प्रिसाइसली नो कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट हैं, कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट नहीं है। बट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इस टाइप की चीजें डिफाइंड नहीं होती हैं कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा, ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, बिकॉज टिल डेट most of you have been preparing for those school examinations only. So you won't have this one particular NCERT, इसमें से सब कुछ जो पूछेंगे वो इस बुक से ही पूछेंगे, ऐसा नहीं है। जब तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हो, सो थोड़ी सी प्रिपरेशन ओपन एंडेड होती है। यस, देयर इज अ सिलेबस, बट उसके बियॉन्ड भी थोड़ी थोड़ी चीजें कैन बी आस्क्ड, सो यू हैव टू प्रिपेयर होलिस्टिकली। I'll repeat, therefore you have to prepare holistically. So they are not your school examinations. The weightage of every chapter isn't defined. Isn't defined. So we get a few emails asking, sir, इस चैप्टर का कितने मार्क्स में से आएगा? मैं जब भी कोई लॉजिकल की क्लास स्टार्ट करता हूँ, a few question that I receive on the chat when I'm taking a live class, सही जो आप पढ़ा रहे हो ये इसमें से कितने क्वेश्चंस आएंगे? मुझे कैसे पता? मैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए नहीं पढ़ा रहा, वहां पे कोई स्ट्रक्चर डिफाइंड नहीं है, कितने भी आ सकते हैं, ठीक है। इन एलआर यू कैनॉट बी स्ट्रांग इन वन एरिया, मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, या लॉजिक आएगी या लॉजिक नहीं आएगी, इट इज ऑल कनेक्टेड। सो हाउ यू शुड बी लुकिंग एट लॉजिकल रीजनिंग इज, एंड इनफैक्ट मैथ्स एज वेल, तो मैथ्स एंड लॉजिक गो hand in hand. तो लॉजिक में there are lot of chapters, so consider all those chapters like different dots, राइट? बहुत सारे चैप्टर्स है, कंसिडर ऑल दो चैप्टर्स लाइक डिफरेंट डॉट्स, और वो सारे के सारे डॉट्स आपस में कनेक्टेड हैं। सो जब तुम एक चैप्टर पे एफर्ट मारते हो, तुम्हें इंप्रूवमेंट सबकॉन्शियसली, तुम्हारे इंप्रूवमेंट दूसरे चैप्टर्स में भी हो रहा है। सो इट इज ऑल कनेक्टेड। ऐसा यहां नहीं होगा कि मुझे चैप्टर नंबर 1 आता है, चैप्टर नंबर 5 आता है, चैप्टर नंबर 8 आता है, 2 3 4 नहीं आता। दिस विल नेवर बी अ केस। या तो मैं 1 से लेके 8 तक सारे आएंगे, या तो मैं कुछ भी नहीं आएगा। मुझे चैप्टर नंबर 8 आता है, 4 5 नहीं आता, यू वुड ओनली बी फूलिंग योर सेल्फ। तुम, हाँ, सो अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो इधर, सो व्हाई एम आई पुटिंग दिस थिंग इन वर्ड्स इज, जब तुम प्रिपेयर करोगे, राइट, जब भी तुम प्रिपेयर करोगे, जब तुम एक चैप्टर पे एफर्ट मार रहे हो, उसका इंपैक्ट तुम्हें बाकी चैप्टर्स पे भी दिखेगा। If you're putting an effort on one chapter, that will be visible for you in the other chapters and in the overall section as well. Everything is connected, right? Everything is आपस में connected. I hope that is understandable. I've already said that open-ended preparation होती है. And the last point, which is a very interesting point, which is against your general psychology, it says refer to solutions. Once you're preparing for national level entrance test, it is very important for you to look at solutions while practicing questions. I'm a big fan of referring to solutions.
मैथमेटिक्स कर रहे हो, लॉजिक कर रहे हो, यू वुड नीड सॉल्यूशंस. तो सॉल्यूशंस at the back of the book or at the end of the exercise are your best friends. I सॉल्यूशंस जब हम स्कूल में जाते हैं तो मतलब सॉल्यूशन देखना पाते हैं. इट्स अ क्राइम. तुम गधे हो क्या, तुम सॉल्यूशन देख रहे हो? तो दिस विल नॉट हैपन हियर. This will genuinely not happen here. Solutions will be your best friend. Refer to solutions. क्यों? क्वेश्चन देखा, समझा, कोशिश की, सॉल्यूशन देखा और सीखा. ठीक है. और जब तुमने वो चीज सीखी तो क्या होगा, सॉल्यूशंस देखते देखते अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स यू विल डेवलप ऑन योर ओन एज वेल, जो कि तुम्हें करना भी चाहिए. ठीक है, जो कि तुम्हें डेफिनेटली करना भी चाहिए. सो आई जस्ट रिपीट, दीज आर नॉट ए स्कूल एग्जामिनेशन. सो किस चैप्टर का क्या वेटेज है, इट इज नॉट डिफाइंड. कॉन्सेप्ट्स आर कनेक्टेड. यू नीड टू अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ टाइम इफ यू स्पेंड इन वन चैप्टर विल बी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी अदर. मैंने नहीं बोला सम चैप्टर्स, एट एवरी अदर चैप्टर आई विल एज वेल. तुम एक एरिया में स्ट्रांग नहीं होगे, तुम पूरी लॉजिक में स्ट्रांग होगे अगर तुम होगे तो. एंड यू नीड टू बी अ लिटिल ओपन एंडेड विथ योर प्रिपरेशन. यू कैन नॉट बी वेरी क्लोज कि इतना ही आएगा और ये सब नहीं आ सकता. एंड सॉल्यूशंस आर योर बेस्ट फ्रेंड. ठीक है. नाउ लेट्स गेट टू द सिलेबस. So I've divided the syllabus into four parts and four very interesting parts. The part one is syllogisms, conditional statements, data arrangement of puzzles, ranking test, inequality, arithmetical reasoning. Arithmetic is a mathematical term, so math based reasoning, and then input output. So ये जो मैंने part one और part two लिखा है, पार्ट वन और पार्ट टू में मैंने वो चैप्टर्स लिखे हैं जिनके अगर ये चैप्टर्स तुम्हारे स्ट्रांग हैं, part 3 and part 4 will be automatically taken care of, especially part 3. Part 4 is a little interesting thing and part 4 is a little different. So part 1 and part 2 अगर तुम एफर्ट मारो, तुम्हें part 3 पर बहुत एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है. part 3 ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा. पार्ट 1 पार्ट 2 पे एफर्ट मारोगे, पार्ट 3 ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा. इंडिपेंडेंटली पार्ट 3 कभी स्ट्रांग नहीं होगा. So if your part 1 and part 2 is not good, part 3 can never be good. So part 2 consists of paragraph and passage based critical reasoning. Now you would typically find these questions in the mocks and even in the legal edge ranker study material. क्या होते हैं ये पैसेज बेस्ड क्रिटिकल रीजनिंग, विच आर लाइक क्वेश्चंस ऑन इन्फ्रेंसेस, assumptions, strengthening and weakening of arguments, paradox and fallacy. इसको जब अपन क्लासरूम में कवर करेंगे तुम्हें समझ में आएगा. एंड देन देयर इज स्टेटमेंट बेस्ड क्रिटिकल रीजनिंग एज वेल. सो इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ और पैसेजेस यू हैव वन लाइनर स्टेटमेंट्स. ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्रिटिकल रीजनिंग एज वेल, दैट टेक्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, assumptions, अगेन कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट एटसेट्रा. सो पार्ट वन मैंने बोला, पार्ट वन फॉर मी इज द कोर ऑफ लॉजिक, एंड इसमें पार्ट टू में पैराग्राफ बेस्ड क्रिटिकल रीजनिंग इज अगेन द कोर ऑफ लॉजिक. तो ये मुझे दो चीज लगती है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी चीजें मैंने पार्ट वन और पार्ट टू में कवर की है. पार्ट फोर इज इंटरेस्टिंग. सो सम लाइक सुडोकू, आई वुड लव स्टूडेंट्स टू बी सॉल्विंग सुडोकूस. इनडायरेक्टली क्या सुडोकू एग्जामिनेशन में आएगा? शायद नहीं, बट सुडोकू सॉल्व करने से तुम्हारी ओवरऑल लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स इंप्रूव होगी. आई हैव रिटन समथिंग नोन एज अ रूबिक्स क्यूब. आई होप यू हैव हर्ड ऑफ द रूबिक्स क्यूब. वही है. सो प्लेइंग गेम ऑफ चेस, रूबिक्स क्यूब, सुडोकू, यू आर पुटिंग सम प्रेशर ऑन योर माइंड. तो कभी भी फ्री हो, इफ यू आर इन्वॉल्व विद सुडोकू एंड रूबिक्स क्यूब एंड योर चेस एंड ऑल, तुम्हारा पार्ट वन और पार्ट थ्री ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होता चला जाएगा. सम माइंड बॉगलिंग पजल्स. व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से सम माइंड बॉगलिंग पजल्स? कभी कभी वो रैंडमली तुम्हें मैसेजेस आते होंगे दैट दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन द आईएएस, द कैट्स और समथिंग, या तुम्हें कभी कोई इंटरेस्टिंग सी पजल देता है कि तुम इसको सॉल्व करो, right? So all those puzzles will help you in generally developing your logical reasoning skills. Part 4 is a very interesting thing. मैंने एंड में लिखी हुई है, a lot of reading of non-fiction text. Non-fiction text की reading will help you improve part 2. So if you generally read your newspapers and you read your non-fiction text, so logical reasoning, newspaper were always connected to current affairs. No, your passage-based critical reasoning is pretty much dependent on your reading of your non-fiction text. So non-fiction test and then analysis of some classics. Now तो तुम्हारे पास if you get your ranker study material of legal edge, there is a chapter by the name LR classics. ठीक है, so once you go through those, मतलब those are generally logical reasoning classics. This is your complete syllabus. अब इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा. ठीक है, so this will take care of everything.
पार्ट 3 में there is a term which is written नॉन वर्बल रीजनिंग एज वेल. दो क्लैट एक्सप्लिसिटली बोलता है क्लैट कि मैं नॉन वर्बल रीजनिंग नहीं पूछूंगा, बट इट्स ऑलवेज माय सजेशन कि नॉन वर्बल की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए. कुछ नहीं है, इट इज वन एंड द सेम थिंग, ओनली बेंट ऑफ माइंड सेम है, बट कर लेनी चाहिए. ठीक है. सो आई गो थ्रू द कंप्लीट पार्ट. दिस इज वेयर आई वांट यू टू रियली मेक नोट्स. पार्ट 4 तुम्हारे लिए बहुत आसान है इग्नोर करना, बट पार्ट 4 से ही तुम्हारे, सो पार्ट 4 एंड पार्ट 1 विल हेल्प यू बिल्ड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ओवरऑल लॉजिकल रीजनिंग एज अ सेक्शन. एंड पार्ट 1 और पार्ट 2 की ब्रॉडली हेल्प से पार्ट 3 ऑटोमेटिकली हो जाएगा. ठीक है. देयर आर पार्ट 3 एज simple topics like directions, the blood relation, series, alphabet reasoning, blood cubes and cuboids, analogy, coding, decoding. ठीक है. I mean, all this is a part of your, a few of you must have attempted NTSC in your standard 10th, और NTSC में वो पार्ट 3 वाले चैप्टर्स हैं. हम बहुत सारा वहां पे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 4 पे फोकस नहीं करते, एंड वी अज्यूम कि जो मैट एनटीएससी का है वो इसी कुछ कुछ कनेक्टेड होगा, बट मैट ऑफ एनटीएससी इज फोकस्ड मोर अराउंड द पार्ट 3. And when you are preparing for a national level entrance test, we are looking for CLAT, ALET, MHCT, SLAT, and all those examinations should be much more concerned with part 1 and part 4. And yes, that passage-based critical reasoning of part 2 as well. So I hope तुमने यहाँ पे सारे नोट्स बना लिए होंगे. दिस इज वेयर योर फोकस शुड बी. मैं तुम्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, एंड आई जस्ट टोल्ड यू दैट एवरीथिंग, मैं स्लाइड 1 से बोल रहा हूँ, लॉजिक में एवरीथिंग इज इंटर कनेक्टेड. ठीक है. There's something now. Let's move the recommended books. Now, what would be the recommended books for you guys? The first and foremost has to be the LE ranker study material and those mock tests, because nationally acclaimed, is the most exhaustive and the comprehensive preparation material that is available in the country. So can very easily say that. So that has to be your priority number 1. Matlab, it's the most comprehensive and the most exhaustive material you will ever find for your law entrance test. Second, interestingly, which I've always said, would be the newspapers. So newspaper you get every day. उसमें जो non fiction उसमें बहुत सारा हो, there are a lot of articles around a lot of different topics. वो सब जब तुम पढ़ोगे, you would get benefit for current affairs as well, legal reasoning as well, and as well your passage based critical reasoning questions. So that is the importance of a newspaper. So once you read a newspaper, that is helpful for you in 3 different areas. So spending 40-45 minutes with a newspaper can be as effective as anything else. Fine. Third, your verbal and non-verbal reasoning by R.S. Agrawal. I've particularly mentioned non-verbal reasoning because, as I said, your examinations are evolving. You never know what kind of changes would be made in the 2021 CLAT and in the 2022 CLAT as well. So you need to prepare holistically, right? So verbal and non-verbal reasoning by R.S. Agrawal. I'm sure you must have heard of the author. He was one who ensured that your 9th and 10th went pretty fine. Gmat official guides. If you Google it out, the Gmat official guides are available. Gmat as an examination, where I say that is a mother of critical reasoning, have been getting a few text or messages ki sir, why do you focus on the Gmat? Concept wahi hai. I'll be keeping everything aside. Yes, concept वहीं पे है, और जितना researched वो examination है, जितनी research उनकी official guides हैं, you can actually bet on the concepts and the solutions there. So, and last but not the least would be analytical reasoning by M.K. Pandey. So these are the 5 things and should be complete. I mean, I don't think you need anything else apart from these 5 things if you are willing to attempt 2021 and 2022 CLAT. So I'll repeat, the first would be the legalist ranker study material and the mock test and the sectional test and everything. Second would be the newspapers, mandatory, period, full stop. Verbal and non-verbal reasoning by R.S. Agrawal, Gmat official guides, yes, and analytical reasoning by M.K. Pandey. अब जो हम 5-6 एग्जामिनेशंस की बात कर रहे थे, कुछ एग्जामिनेशन में किसी का वेटेज ज्यादा हो सकता है, किसी में किसी और का, बट अगेन वी नीड टू प्रिपेयर होलिस्टिकली. जब भी कहीं डाउट आए कि ये मैं क्यों पढ़ रहा हूं ये, एंड दिस गोज फॉर ऑल 5 सेक्शंस, व्हेनेवर इन डाउट जस्ट टेल योरसेल्फ दैट यू हैव टू प्रिपेयर होलिस्टिकली, and you might get surprises
for 2021 CLAT as well when the notification comes, because the examinations are evolving. So recap, as I said, this would be one of the most important slides, so I've repeated it. They are not your school examinations, so don't expect कि क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा पढ़ लूं वैसा पढ़ लूं, कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, इट्स नॉट डिफाइंड. इफ somebody tells you तो वो तुमसे गलत बोल रहा है. ठीक है. The weightage of every chapter isn't defined. मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं. Concepts are like dots and they get connected completely. Concepts are like those dots and those dots get connected completely. Either you are good at LR or you are not. Why have I put this point here? That is why focusing on every dot would be important. एक डॉट को मिस कर दिया, इफ यू मिस अ टॉपिक कॉल्ड क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स, इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन अ लॉट ऑफ अदर चैप्टर्स एज वेल, जो कि शायद दिखेगा नहीं, सबकॉन्शियसली इंपैक्ट होगा, दिखेगा, विजिबल नहीं होगा वो. एंड इफ यू आर स्ट्रांग विद क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स, इट विल हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ a lot of other chapters. It's open-ended preparation. Yes, you can be sure of 75 to 80% of the syllabus, but then you have to be open for surprises. So 15-20% you have to be open for surprises. Day one से अगर clarity होगी ना, तो कभी तुम्हारे mock test में if you find something surprising to you, tell yourself हाँ ये तो मेरे syllabus का part था. Last but not the least, refer solutions. Refer solution देख देख के सीखो. For logic as well as for math, research a bit more. I mean, so an institution can only give you a framework. You'll need to sit and do a lot of research at your end. Self study करोगे, subjects or topics evolve हो जाएंगे. And target a score of 100% in logical reasoning. It is pretty much achievable. जितने भी questions आते हैं, you should look at solving all of them. Fine. So that's it from my side. I think I've covered everything that I wanted to. I hope now you have a little idea of how to go ahead with logical reasoning. पूरे सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड किया है. सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, हर एक पार्ट की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है. एंड दैट्स इट. सो I hope in case you are still having any kind of queries, you may email us on query@legaledge.in, or you can drop us a call as well. Okay? So that's it from my side. I hope to see you guys very soon, and happy learning. Keep preparing. Study hard. Bye bye. See you.